Hello everyone, good evening. Today is 7th of August 2026 and we have Kamal with us today for regarding the Vastu session. He is a PhD scholar with Visro and today he will be explaining about the Vastu principles. Over to you, Kamal. Yeah. All the best. Sir. All Yeah. the best. Thank you, everyone. So, welcome to the first session of Vastu Shastra. Let me introduce myself. I am Kamal Kumar from Delhi. I have done numerology and chronology in 2023. I am associated with Vedic Science Research Organization, VISRO, from 2024 and have done few courses from them, such as numerology, crystals, basics and advanced Vastu, nakshatras, medical astrology, and Bhrigunandinadi. Currently, I am pursuing PhD in Astro Vastu from VISRO. So, brief introduction about Vedic Science Research Organization. Today's session is presented under the guidance of Professor Krishnakant Sir, founder and chairman of Vedic Science Research Organization, a platform dedicated to preserving and advancing Vedic science like astrology, Vastu Shastra, and numerology. VISRO's approach blends traditional wisdom with structural practical learning with logic. From founding chairman Krishnakant sir and to all senior members, all are extremely supportive, friendly, and helpful. As their motto is, we just don't teach astrology, we make astrologers. So let's start with my topic. What is Vastu Shastra? वास्तुशास्त्र एक ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम है आर्किटेक्चर और डिज़ाइन का जो हमारे एशियन टेक्स्ट में रूटेड है, जो हमारे एशियन क्लासिक्स में बताया गया है प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से कि हम बिल्डिंग्स को, घर को, सिटीज़ को कैसे अलाइन कर सकते हैं, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे उसको नेचर के साथ अलाइन करके बना सकते हैं, जिसमें जैसे कि डायरेक्शनल उसकी किस हिसाब से होनी चाहिए, कहाँ हमें अगर हम एक घर बना रहे हैं तो हम कहाँ किचन बनाएंगे, कहाँ बेडरूम बनाएंगे, कहाँ एंट्रेंस रखेंगे, ये सारा हमारे क्लासिक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। 5 एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में बताया गया है, जैसे कि हमें पता है कि हम पूरा यूनिवर्स 5 एलिमेंट पे ही चलता है। इनफैक्ट हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट्स पे चलती है, तो बैलेंस करके चलना उसका बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ हमारे स्ट्रक्चर में होती है। अगर कोई भी एलिमेंट उसका इम्बैलेंस हो जाए तो वो वास्तु दोष उसमें आना शुरू हो जाता है, जो ह्यूमन बींग को भी, उसमें रहने वाले लोगों को भी परेशान करता है। सेम उसमें बताया गया है एनर्जी फ्लो का, कि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन घर में होना कितना ज़रूरी है, कहाँ से होना चाहिए, कहाँ से सनलाइट आनी चाहिए और कहाँ पे हमें उसको क्लोज करके रखना चाहिए। सेम उसमें हमें जो बताया गया है कि किस टाइप का प्लॉट हमें लेना चाहिए, उसकी सराउंडिंग्स कैसी होनी चाहिए, उसका स्लोप कैसा होना चाहिए। सेम उसकी प्रोपोर्शंस और ज्योमेट्री उसके हिसाब से हमें बनाना का सारा उसमें अपना हमारे क्लासिक्स में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। हम कई बार ये मतलब मिसकंसेप्शन होता है कि जो चाइनीज फेंग शुई है वो इसके वास्तु के हिसाब से या वास्तु के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन उसके और इसके जो हमारे मेथड्स है दोनों अलग है। बेसिकली जो वास्तुशास्त्र है वो फेंग शुई से बहुत ज़्यादा पुराना है। डिफरेंस बिटवीन वास्तुशास्त्र एंड एस्ट्रो वास्तु। वास्तुशास्त्र में बेसिकली हम लेके चलते हैं उसकी डायरेक्शंस, एलिमेंट्स और उसका जो ज्योमेट्रिकल स्पेस बनता है। एस्ट्रो वास्तु में हम उसको अपने जो प्लॉट है, जो भी हमारा फ्लोर है या फ्लोर मैप है, उसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अलाइन करते हैं, बर्थ चार्ट के साथ उसको मैनेज करते हैं। देन वास्तुशास्त्र में हमारा मेन फोकस होता है फिजिकल ओरिएंटेशन में, कि लेआउट उसका कैसा है, कंस्ट्रक्शन कैसी रहेगी। लेकिन एस्ट्रो वास्तु में हम लेआउट के साथ साथ उसका प्लैनेट्स और उसको हॉरोस्कोप के साथ अलाइन करके चलते हैं, ताकि जो उसकी एलिमेंट्स हैं, जो उनकी एनर्जीज हैं, वो डिफ्रेंशिएट ना करें। वास्तुशास्त्र में हमें एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस मिलती है, एक रूल मिलता है कि किस तरह से हमें घर बनाना है। लेकिन एस्ट्रो वास्तु में हम जो भी उसमें रह रहा है या जो भी नेटिव है, हम उसका चार्ट लेके चलते हैं कि उसके हिसाब से उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेम ऐसा ही हम रेमेडीज़ के साथ करते हैं। वास्तुशास्त्र में हम जो रेमेडीज़ करते हैं वो स्ट्रक्चर उसका साइज अपना डायरेक्शन चेंज करके या उसमें एलिमेंट डाल के करते हैं। लेकिन अगर हम एस्ट्रो वास्तु में चलें
तो हम उसको जेमस्टोन्स या पर्टिकुलर एरिया या डायरेक्शन के कलर्स, उसके हिसाब से हम उसका रेमेडियल पार्ट करते हैं। सो जनरल पार्ट जो हम वास्तुशास्त्र में देखते हैं कि जो डायरेक्शंस और प्रिंसिपल्स हैं वो सबके लिए सेम है, चाहे वो कोई नेटिव है या उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं सबके लिए वो सेम रहेगा। लेकिन जो एस्ट्रो वास्तु है वो एक घर में जितने लोग रह रहे हैं सबके लिए अलग तरह से काम करेगा। उनके जो पर्टिकुलर जो उनका बर्थ चार्ट है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से अलाइन करेंगे। तो हम ये लेके चलते हैं कि जो वास्तुशास्त्र है वो हमें डिजाइनिंग उसकी बताता है यूनिवर्स के हिसाब से कि उसका डायरेक्शन और एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए। और जो एस्ट्रो वास्तु है वो एक लेयर देता है पर्सन को उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से, ताकि हम बर्थ चार्ट और वास्तु को मिला के उसकी रेमेडीज कर सकें। बोथ सिस्टम्स आर पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स, इसके लिए हमें रिजल्ट भी उसके इक्वल मिलते हैं। तो शास्त्र का जो ओरिजिन है, वास्तुशास्त्र का जो ओरिजिनल है ये हमारा ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम है, जो हमारे एशियन रूट्स से हमारे पास हमारी जो ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा हमें दिया गया है। इसका हमारे एशियन क्लासिक्स में जो मेंशन है वो ये है कि जैसे मयमता हमारा जो क्लासिक्स है एशियंट, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मनसरा में है, बृहद संहिता में है, विश्वकर्मा प्रकाश में पूरा डिटेल इसका दिया गया है, पर्टिकुलर एक एक पार्ट। देन अग्नि पुराण, वेद मत्स्य पुराण, अथर्ववेद, ऋग्वेद, हमारे जितने भी एशियन स्कल्पचर्स हैं सब में कहीं ना कहीं इसका मेंशन किया गया है कि वास्तुशास्त्र एक बहुत ही एशियन नॉलेज है जो हमें हमारे ऋषि मुनियों से दी गई है। इंडियन आर्किटेक्चर की अगर हम हिस्ट्री देखें तो 5,000 साल से पुरानी हिस्ट्री है। उसके हिसाब से भी अगर हम लेके चलें तो जैसे इंडस वैली है, हिंदू टेम्पल्स हैं, बुद्धिस्ट स्तूपास हैं, या मॉडर्न सिटीज हैं जैसे चंडीगढ़, ये सब एक वास्तु के हिसाब से या उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली मेंटेन करके बनाई गई हैं, पूरी प्लान करके बनाई गई हैं। अगर हम डिटेल में चलें तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें हम देखते हैं मोहनजोदारो या हड़प्पा के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो पूरा ग्रिड प्लान करके दिया गया है, उसमें ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सब बताया गया है। सेम ऐसे ही हमारे सांची स्तूपा हो गए, गुप्ता पीरियड पे आपके अजंता केव्स हो गए, और जो हमारे हिंदू टेम्पल्स हैं कैलाशा टेम्पल हो गया जैसे कि, देन खजुराहो, लिंगराज टेम्पल, देन अगर हम दिल्ली में देखें तो कुतुब मीनार है, देन ताजमहल है। अगर हम राजपूत स्टाइल्स पे जाएं तो फोर्ट्स हैं, आपके सिटी पैलेस है जयपुर का, अंबर फोर्ट है। देन मॉडर्न अगर हम इंडिया में देखें तो चंडीगढ़ हो गया, IIM अहमदाबाद हो गया। ये सब एक वास्तु के अकॉर्डिंग बने हुए बिल्कुल प्लान सिस्टम से बनाए गए हैं जो कि जिसमें A to Z हमारा शुरू से फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारा वास्तु उसमें यूज किया गया है। सो वास्तु शास्त्र का बेसिक पर्पस सिर्फ ये है कि हमें नेचर के हिसाब से अपने आप को अलाइन करके चलना है, क्योंकि कितनी ऐसी फोर्सेस हैं हमारे आसपास जो हमें कुछ दिखती हैं कुछ नहीं दिखती, जिनमें से जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमारे पास है। इसी तरह से फोर्स है, जैसे फ्लेम्स हैं, फ्लेम्स ऊपर की तरफ निकलती हैं, ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स है। कोई चीज़ जैसे अर्थ पे जो भी है उसको स्पेस में वो उसको जाने नहीं दे रही, उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो इस तरह से हमारी फोर्सेस हमारे जो वास्तु के हिसाब से अलाइन करती हैं। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स लेके चलेंगे एंड मैग्नेटिक फोर्स लेके चलेंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स के बीच में ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना के चलती है, लाइक दिस, जिसमें जैसे आजकल हमारा जो मैग्नेटिक कंपास है वो इसी थ्योरी पे काम करता है। देन हम चलेंगे कि एशियन टाइम में हम डायरेक्शंस को कैसे देखते थे या कैसे ऑब्जर्व करते थे, क्योंकि तब हमारे पास मैग्नेटिक कंपास नहीं थे। जो पहला प्रिंसिपल हम वास्तु का लेके चलते हैं वो ये है कि हमें डायरेक्शन लेनी है। एशियन टाइम्स में या पुराने टाइम में हम लोग ईस्ट को लेते थे कि सनराइज ईस्ट से हो रहा है, और नाइट में देखते थे कि पोल स्टार किस साइड पे है। जहाँ पोल स्टार हमें दिखता था हम उसको नॉर्थ ले लेते थे और सनराइज को हम ईस्ट मान के चलते थे। लेकिन जो ट्रू नॉर्थ है वो जब अर्थ एक्सिस करता है तो उसके बिल्कुल नॉर्थ पे, नॉर्थ एंड पे पड़ता है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर मेंशन किया था। लेकिन अभी हम जैसे सनराइज का लेके चलते हैं ईस्ट से, उसका हमें एग्जैक्ट पॉइंट इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि सन जो है विंटर और समर्स में
और अप्रोक्सीमेटली 24 डिग्री के डिफरेंस पे इक्वेटर के आसपास रहता है। तो हम उस सिर्फ सनराइज के उस पे नहीं लेके चल सकते अपने नॉर्थ को, क्योंकि हमारे लिए नॉर्थ बहुत इम्पोर्टेंट है वास्तु के लिए। इस हिसाब से हमारा एनर्जी फ्लो भी हमें एक मेन इम्पॉर्टेंट है, जो हमें हमारे वास्तुशास्त्र में चाहिए होता है कि किस डायरेक्शन से हमें सनलाइट चाहिए, एयर सर्कुलेशन हमें कैसा चाहिए, ओपन स्पेस हमें कहाँ चाहिए, कहाँ हमें वाटर प्लेसमेंट चाहिए, कहाँ पे हमें मतलब हमें बैठना है, कहाँ हमें मेडिटेशन करना है। ये सारा एनर्जी फ्लो हमें बताता है कि ताकि किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे किसी पे ना पड़े। इसके बाद हम आते हैं 5 एलिमेंट्स की थ्योरी पे, जिसके ऊपर ये पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। The entire universe, whether it's stars, planet, or any form of life, including our body, is made up of 5 elements. These elements need to be coordinated with 5 elements of human body as well. Vastu is nothing but the science of balancing these elements in proportion to keep the residents of the house in perfect harmony for right decision, peace, and happiness. These elements are water, air, fire, earth, and space. There is life on earth because of presence of these 5 elements, because everything is connected through energy. This is the key principle of Vastu. Through the combination of these 5 elements, the space and energies can be aligned for the better working for every individual. The interaction, interaction work in two styles, two cycles. That is, one is creation and one is destruction. So this is the cycle of creation, where water when evaporate creates air, which is also called wood. Then air creates fire, because if you burn the fire, you need air. Without air, you can't burn the fire. Fire then result in ashes, which create earth. Then earth becomes hard to metal, which also called space. Then space melts and create water. So this is a full circle, which we said cycle of creation. Then it's come to cycle of destruction. That means what are the elements friendly or what are anti elements. For example, water destroys fire, so it is anti element for fire. Fire melt metal, same as metal cuts wood. Same, wood destroys earth and then earth destroys the water. एलिमेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जो वाटर है उसका जो कलर है वो ब्लू है। उसका शेप है वो हमेशा वेवी रहता है, स्टेबल नहीं रहता। उसका मेटल है एल्युमिनियम। जो एयर एलिमेंट हम लेते हैं उसको ग्रीन कलर में डिनोट करते हैं। रेक्टेंगुलर उसकी शेप आती है और वो स्टेनलेस स्टील के मेटल के उसमें हम लेते हैं। फायर का कलर रेड रहता है, शेप ट्राइंगल, एंड मेटल इज कॉपर। अर्थ color is yellow, shape is square, and metal is brass. Then space, its color is white, which is in circular form, and metal is iron. Now, these 5 elements, water is liquid, which means to flow. Anything that's flowing in nature, the intensity to clean, it relates to water element, like the clarity of mind, new ideas, vision, new opportunities, income source, immunity come from this element. Then air offers oxygen, breath to life. Anything that has property of life and growth relates to element wood. It focus on the things that brings hurdle in your growth and development. And association in society, risk for growth, developing inner self and happiness in life comes under this element. Then fire. Fire is spark that purifies, enlightens, protects life. It gives fame, recognition, power, strength, confidence, and warmth in your relationships, which is comes under this element. Then earth element. Earth offers the resources you need to live and the stability to nourish your life. Same in Vastu, sorry, stability in career, relationship, patience, maturity comes under this element. Then space. Space is the route to manifestation.
offers you boundary of expansion based on the proper structural properties like sense of direction, knowledge, expansion ideas, and sharpening of skills comes under this element. Five elements and its direction. The water element comes from north direction to east. Then fire element east to south direction. Earth element goes to south to west direction. Air element goes west to north direction, and the space element is the center of the house. So now to balance these five elements, a space is divided into zones which are governed by five elements respectively. When there is imbalance, the element in the form of any activity, destructive, color or metal. There is an imbalance that affects the related zone and disharmonies the life. For example, water governs north, air governs east, fire governs south, space governs west, and earth governs center. As we studied the cycle of creation and cycle of destruction, the balance depends on this simple working. If destructive or anti-element reside in exit, one second, sorry. As we studied the cycle of creation and cycle of destruction, the balance depends on this simple working that an anti-element resides in existent direction like water comes in south, it causes an imbalance and create problems for an individual. So basically element balance is equal to life balance because our body is also made up of Panch Tattva like our home. When home elements are disturbed, it reflects our mind like overthinking, anger, fear, then body where disease, sleeplessness, then spirit, lack of joy, charity and purpose. So balancing our home's five element is like aligning our body chakras which bring peace, progress and purpose. Now directions in Vastu. Vastu Shastra assigns deep spiritual and practical significance to the main eight cardinal and intercardinal directions. Each direction is ruled by a specific deity, planet, and element and governs key aspect of human life. When these directions are used correctly, they attract abundance, and when misused or blocked, they can cause recurring problems regardless of astrology or karma. So, these are the main eight directions. For example, east direction, the Lord is Indradev, planet is Sun, and the element is air. For west direction, Lord is Varuna, planet is Saturn, and element is space. For north direction, Lord is Kuber, planet is Mercury, and element is water. For south direction, Lord is Yama, planet is Mars, and element is fire. For northeast direction, Lord is Shiva, planet is Jupiter, element is water. And for southeast direction, the Lord is Agni, planet is Venus, and element is fire. For northwest direction, we have a Lord Vayu, planet is Moon, and element is air. For southwest direction, we have a Lord Neruti, planet is Rahu, and element is Earth. So these are the main elements where we have to focus more uh, to align the directions and the proper vastu of our house. So thank you everyone for your time. In the next session, we will discuss detail about all the directions with their deities, with their elements, with their all the functions, what they can do, and how can the directions align with our birth chart. Thank Okay. you, ma'am. Okay. Thank you. That was a nice presentation, Kamal. So any questions on this? So till now, we did not had any Vastu session as of now on the PhD part, PhD scholar sessions. We did not had any Vastu session. This is the first session.
So it might be new to you people, many of you. But for the students who are already with Visro, they already know it, of course. So any questions? If there are no questions, then we can conclude the session. Sir, your comments, please. Yeah, it's a good one. We need to give it more clarity. Probably he'll be doing in the next week. So let's wait. After once he finish up, then I can give some comments. Okay. But till now, it Thank is you. a good one, a good start. A good start. So the Thank you, sir. introduction was very good, Kamal. Suraj ji, बोलिए. ऑन दी होल मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कमल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो पॉइंट्स उन्होंने लिए उसे समझाए हैं और उसके लिए उनका धन्यवाद, मैं उनको बधाई देती हूँ। थैंक यू Yeah. मैम, थैंक यू। Thank you. Thank you, Suraj ji. So the next session will be on 10th of August. Please note the timings. It will be from 11 to 12:30 in the morning by Kirti Diwan. So please join everyone on Monday, 10th of August at 11 o'clock. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन।